welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा daily dose of Bollywood news, fashion trends, TV and social media से जुड़े हर update. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Hrithik Roshan hints at Brahmastra 2. Ranbir Kapoor Ranveer Singh to come together for Sanjay Leela Bhansali's film. Sharma chats with Ayesha Jhulka and Tanuja Chandra. ऋतिक रोशन मल्टी हीरो फिल्म्स में क्यों आते हैं नजर? ऋतिक रोशन और सैफ अली खान विक्रम वेधा में एक साथ कर रहे हैं स्क्रीन स्पेस शेयर। और ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर आ रहे रूमर्स पर ऋतिक रोशन ने कैसे किया रिएक्ट? ऋतिक रोशन इन दिनों सैफ अली खान के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा को प्रमोट करने में लगे हैं। इस फिल्म के एक्शन पैक्ड ट्रेलर ने ऑडियंस को काफी अट्रैक्ट किया है। फिल्म में ऋतिक रोशन के डेयर डेविल ग्रे कैरेक्टर और सैफ अली खान के सुपर कॉप अवतार को भी काफी अच्छे रिएक्शंस मिले हैं। इन अदर वर्ड्स, सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ऋतिक रोशन को किसी दूसरे बड़े बॉलीवुड स्टार के साथ एक ही फिल्म में देखा गया है। ऋतिक रोशन इससे पहले भी कई मल्टी हीरो फिल्म्स में नजर आए हैं। ऐसे में जब एक रीसेंट इंटरैक्शन के दौरान सुपरस्टार ऋतिक रोशन से इस तरह की फिल्में चूज करने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कैंडिडली इसका जवाब देते हुए कहा कि ऐसा करने से वो स्क्रीन पर और बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। Yeah, it just makes your work so much easier and better. You know, you get to see more. So I don't think an actor should be opposed. I would love doing an ensemble. More the merrier. Because working in that, in equations where you're not standing by yourself, but you have to relate and give and take with other important, as important or more important characters in the same film. Really is your access points to growth. Working with more actors that intimately, like I did in ZNMD, like I did in War, now with Saif, it really pushes you to be better because you're seeing wonderful acting in front of you, and for me it was an incredible experience. For me, every time I've done a 2-hero film or an ensemble, it's been way better fun for me. वैसे विक्रम वेधा में ऋतिक रोशन के कई जबरदस्त एक्शन सीन्स हैं और साथ ही उनके नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में भी फैंस को हाई ऑक्टेव एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें क्रिश 4, वॉर 2 और फाइटर शामिल हैं। सो यहाँ एक्शन स्टार ऋतिक रोशन से उनके हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स को लेकर क्वेश्चन किया गया कि कितना सेफली वो इस तरह के सीन्स को परफॉर्म करते हैं। तो इंटरैक्ट करते हुए उन्होंने कहा, That is a thought in my head that the injuries that I've had, they are getting enhanced because, overuse over time, and it's been quite some time that I've been abusing the body in that manner for the sake of action. So yes, I have become more careful, if that's the question. But my aspiration is to do better than what I did last year. As an actor, as somebody who wants to do action and somebody who likes to dance, I want to actually do better, and I think it's possible. आपको बता दें कि विक्रम वेधा सेम नाम की फिल्म का हिंदी रीमेक है, और जब फिल्म के डायरेक्टर्स से उनके इस फिल्म को हिंदी में बनाने की वजह पूछी गई, तो इसे एड्रेस करते हुए पुष्कर and Gayatri said, Actually, definitely not a business decision, because I think we spent. Business decision. We could have done 2 films in this. No, for us, somewhere, and it took us a lot of time to actually say we will be involved in the remake. And this was before we started even figuring out how is the project going to be mounted and all that. When our original producer Sashikant from Why Not told us that there is a plan of making this in Hindi, and by contract we have right of first refusal and all that. It took us a lot of time to get back to him to say yes, we will do it. Because we needed to find an in on what is it that is going to excite us to do the film again.
And once we found that then we were convinced, okay, this is going to be our next film as such. But we spent 6-8 months making that decision. Yeah. And once you make it, then there's no going back. I mean, then you try all best possible resources to get that done as best as you can. विक्रम वेधा के इस इवेंट की एक और बड़ी हाईलाइट ये थी कि यहाँ ऋतिक रोशन ने ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर आ रहे रूमर्स पर रिएक्ट किया। दरअसल इंडस्ट्री में ऐसे रूमर्स हैं कि ऋतिक रोशन अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र 2 में नजर आएंगे और साथ ही नितेश तिवारी की माइथोलॉजिकल फिल्म रामायण के लिए भी उनका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। यानी ऋतिक रोशन ने यहाँ कुछ भी क्लियर तो नहीं किया, लेकिन इतना हिंट जरूर दिया है कि उनके आने वाले बाकी प्रोजेक्ट्स भी काफी बड़े होंगे। क्या रणवीर सिंह और रणबीर कपूर आएंगे साथ नजर? क्या रणवीर सिंह और रणबीर कपूर संजय लीला भंसाली की फिल्म में करेंगे काम? संजय लीला भंसाली और रणबीर कपूर का कभी साथ काम ना करने का डिसीजन क्या फिल्म बैजू बावरा से बदल जाएगा? रणबीर कपूर और रणवीर सिंह को साथ में देखने की फैंस की तमन्ना कोई नई नहीं है। बॉलीवुड के इन 2 टैलेंटेड स्टार्स को स्क्रीन पर साथ सभी देखना चाहते हैं। ऐसे में न्यूज है कि शायद ऐसा होना जल्द ही मुमकिन होने वाला है। रिपोर्टेडली संजय लीला भंसाली अपनी अपकमिंग फिल्म बैजू बावरा में रणबीर कपूर और रणवीर सिंह को लीड एक्टर्स के तौर पर लेना चाहते हैं। दरअसल फिल्म बैजू बावरा एक म्यूजिकल सागा है और इस फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली ने रणवीर सिंह को लॉक कर लिया है और अब रणबीर कपूर को इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया जा रहा है। इस पूरी न्यूज पर सोर्सेस का कहना है, Baiju Bawra is a 2-hero film and Bhansali wants Ranbir Kapoor to play the parallel lead alongside Ranveer Singh. The director recently discussed this film with Ranbir and he is hopeful that the Brahmastra actor will come on board. Bhansali's new favorite and Ranbir's wife Alia Bhatt has been the icebreaker between the two, who, as many may know, had a big fallout during Savarya's shooting, following which they both had decided to not work with each other ever again. Ranbir, however, hasn't given his nod yet and the ball is completely in his court whether he rejects the offer or agrees to be a part of this massive revenge saga, burying the past hatchet. मतलब ये है कि संजय लीला भंसाली के इस ऑफर को फिलहाल रणबीर कपूर ने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रणबीर कपूर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म में रणवीर सिंह के ऑपोजिट आलिया भट्ट को लॉक किया गया है, जबकि सेकंड लीड एक्ट्रेस के तौर पर कियारा आडवाणी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। ऐसे में देखना ये होगा कि फिल्म बैजू बावरा की सेकंड लीड पेयर के नाम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। Hello and welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. Today's guests are the stellar Ayesha Jhulka and the director of the new web show Hush Hush. Hello. Welcome to the show, ladies. Hello. Loving the girl power boss energy in this room, and I love it when I'm able to interview like all females because अंदर से ऐसी vibe आ जाती है. You know what I mean? Yes. Okay, you know, I live for that vibe. I know you do. Yes, she does. You know, you guys have sort of been in the movie business for a while, and you have seen it come from a point where women were merely accessories to, you know, the males in the movie, to now being on a Only accessory. we've like I think it's taken some time to sort of break that away, right? And now we're at a place where it's an almost all female cast, it's an almost all female crew.
the director is, we actually have like a woman's vision behind women's stories. So tell me, firstly, did you guys ever think that we would reach a point in mainstream reality where this would be a thing? And also, how has that experience been for you, and how important is it for us to have that? So from the other accessories, basically what she's trying to say is we become a choker. A nice, You become the strong centerpiece, you know. You're the whole The Maharani Har. Yeah, Maharani Har. Maharani Har. Yeah, no, and I have right from the start, when you could possibly count female directors on one hand, Yeah. And also movies were just not even 10% of releases in a year that spoke about female stories, basically. From that time to this, yes, I would say that there is a growth. I do feel that I've been saying the same thing for the last 25 years, and I think that the progress has been not nearly enough. Sure. It is too slow going. To say that there has been a massive change would not be true. I think the change has only just begun, and I do hope for a time when half the films we make, half the stories we tell will be about women, half the directors will be female, half your crew will be female. Then I will begin to feel that it's an equal world. Sure. Equality would still not be achieved even at that point. Absolutely. Ma'am, what about you? I, like both of us feel the same, that even I feel I'm a feminist in such ways. And I think that we have the power, Even when you hear people saying, oh, behind every successful man, there is a woman. Sure. And I always add, telling him he's wrong. So basically, a man and woman, an Adam and an Eve, it's incomplete, no? So when you talk about equality, this has to come up a little bit. This may not go down, but the women power has to come up and then stand there and, try to be equal in terms of performance, in terms of work. I think we have really progressed. And with OTT, I think we've all got the opportunity to explore ourselves, our talents, and bring it out there. Because when the viewers say, we want to watch you, we want to see more films that you make, or the films that you do as an actor or make as a director, how are we supposed to do that? It's not in our control till the time, somebody is there giving us that opportunity to do. Absolutely. She has beautiful stories to say, but we want listeners, we want viewers. I want to do so many different characters. I want to perform. You're just getting started again. Yes, yes. Yeah. It's a long innings to go, of course. I really hope so, pray so, and wish, that way, this is the dream. You always want to do this because you love it, whether it's direction, writing, acting. So, but I think at least we are on that track, like she rightly said. And someday we will get there. And I'm sure we'll get there together, all of us, while we are there. How different is this set? I mean, and this is actually for both of you, because you've also been making movies since back then and you've also been acting in them, right? How different was this set for you now as opposed to what those sets used to be like at the time? Like in terms of maybe comfort level, in terms of maybe the way that a woman's need, not even a woman, a female's needs are just catered to or, understood just out of basic understanding. So what is the difference? I think there is a huge difference. So, like I always say that back then when we were working, basic comforts were not there. Comforts like a vanity van, or even a toilet, or even a dressing area where you could change. And unfortunately, in those times we had 7 changes in a song, 6 changes in a song, and then there is one antara happening here, and then suddenly they have to do the other antara, so you have to change. And then in the middle of nowhere, where you can only see mountains and greenery, where do you change? So we had this, either you go behind cars and then, cover it with something, kapda. And then kapda, or else tie a kapda all around, 4 people are holding, wo bhi dar hai, 4 people are holding. So, everything is like, but choice hi nahi na, extreme, And so, aap karo kya? But then again, like you say, that when you haven't really seen this, right, you feel that is perfect, that's the only way, But now after you get this, jaise mobiles,
Now, when we didn't have mobiles, our world was functioning, na? There was nothing missing. We were functioning, we were fine, we were happy. Now we feel 1 day without a mobile or 1 hour without a mobile, we don't know what to do. Where is the phone? So it is also a matter of habit and adjustment. I think luxury or this kind of, now No, people but feel... it gives you, I can say this, that it gives you as an actor almost rugged sort of hardiness. She's tough. Right. Works long hours. Yeah. And not expecting people to constantly shower you with with comfort. You're there for the job and you do it. And that has come somewhere from there. Because she hustled it out back in the day, right? Yes. And same for me. Yeah. I mean, I've really put in my time. Yeah. So and now I'm really tough. It has made me tough. Because of those times. Yes. Well, thank you so much for joining me, ladies. It was absolutely lovely talking to you, and good luck to you for both of your journeys ahead. Thank you. Thank you very much. Coming up on the show, Ananya Panday gets trolled for her outfit. ACP, wait. हाँ वेट ना यहाँ पे करते ना वेट सामने एकदम पीछे से क्लियर. क्या अनन्या पांडे को उनकी टॉल हाइट की वजह से किया है ट्रोल? आखिर नेटिजन्स ने अनन्या पांडे का क्यों उड़ाया मजाक? अनन्या पांडे को अपने एक रीसेंट अपीयरेंस को लेकर मिली नेगेटिव लाइमलाइट. अनन्या पांडे एक पॉपुलर जेन ज़ी स्टार हैं. अनन्या पांडे अक्सर अपने स्टाइलिश लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर सबका अटेंशन पाती हैं, लेकिन कभी-कभी उनका ये स्टाइल उन पर ही भारी पड़ जाता है, जिसकी वजह से नेटिजन्स को फिर नया मौका मिल जाता है उन्हें टारगेट करने का. ऐसा ही कुछ रिसेंटली अनन्या पांडे के साथ हुआ जब ब्लैक कलर के एक स्टाइलिश सूट में अनन्या पांडे एक इवेंट अटेंड करने पहुंची. वैसे तो एज ऑलवेज अनन्या पांडे अपने इस लुक में स्टनिंग लग रही थी और उन्होंने स्माइल के साथ शटरबग्स के लिए पोज भी किया. लेकिन जैसे ही अनन्या पांडे के रीसेंट लुक का ये वीडियो इंटरनेट पर सरफेस हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया. कुछ नेटिजन्स ने अनन्या पांडे को इस वीडियो की वजह से ट्रोल भी किया. दरअसल वीडियो में अनन्या पांडे कुछ ज्यादा ही टॉल दिखाई दे रही हैं और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को ये बात जरा भी डाइजेस्ट नहीं हुई. ऐसे में कुछ यूजर्स ने वीडियो पर कमेंट करते हुए उन्हें जोकर से कंपेयर किया और लिखा, जोकर आ गया सर्कस का. Another wrote, she looks like circus stilts. तो एक और यूजर ने लिखा, क्या है यार ये. वीडियो पर एक फोर्थ यूजर ने कमेंट किया, she is just 5 feet 7 and looks like 7 feet 5 in this video. Chunky heels क्या? Well, एक यूजर ने तो अनन्या पांडे का कंपैरिजन द ग्रेट खली से कर डाला और लिखा, ग्रेट खली छोटा लगने लगेगा इसके 10 इंच के हील्स पहनने के बाद. वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब अनन्या पांडे को नेटिजन्स ने निशाना बनाया है. इससे पहले भी अनन्या पांडे कई बार कैमरा पर अपने नॉट सो कंफर्टेबल लुक्स की वजह से इस तरह के रिएक्शंस फेस कर चुकी हैं. और अब अनन्या पांडे को अपनी हाइट के लिए पोस्ट पर वियर्ड कमेंट्स मिले हैं. ऐसे में इस पर अनन्या पांडे का क्या रिएक्शन होगा, ये तो देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा. फिलहाल तो लाइगर में लास्ट नजर आई अनन्या पांडे अपने नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं.